चलो कौन है वाला here? Hi, good morning. I can see 2 joinees. Hi, good morning, guys. You can speak up or you can write about yourself who all are there in this live session. A very good morning to all of you. I am Yogeshwar Meena. Very good morning. I am Lieutenant Commander Nikhil Kumar Chandrakala, Founder Director Integrated SSB Virtuosos Club. And I have been the founding member and the first GTO of Indian Navy's 4th Selection Board, SSB Kolkata at Diamond Harbour. I set up the board from scratch, commissioned it, did a few batches there, and then I got transferred to 12 SSB Bangalore. Shubham, Yogeshwar, Jahana, very good morning, very, very good morning. I am here to speak to all the SSB aspirants. Shoot out your doubts. What do you want to have cleared? You guys want to ask anything? You guys want to clear any myth? Go ahead and ask me anything about SSB that comes to your mind. You can always type in the chat window and I will attend to all the questions one to one. Let's see, depending on the number of people who join this live session, we will continue for let's say next another 30 minutes or 40 minutes. Come on, go ahead. If you have any questions, please ask me. Otherwise, I have certain generic things about SSB that I will tell later after having cleared your queries. Go ahead. No questions? Yogeshwar, Shubham, and Jahana Shirin? No questions? Okay, just tell me one thing if you guys can hear me. Sir, can you tell about how to perform in GD when it is a fish market? Okay, Shubham. Okay, understand this. It's a very simple thing that you've got about 20 minutes for GD1 and 20 minutes for GD2. You guys have chosen the topic, and then GTO says, okay, fine. He repeats the topic, and you guys start. He launches you into the discussion. Suppose it's a group size of 10. Just see an average. You'll get about 2 minutes to talk per person. 10 twos are 20. How many times can you speak? You can speak about 4 or 5 times or 6 times. When it's a fish market, I would suggest just keep shut. And the moment you get a gap, you speak with some kind of uh, facts and figures with confidence. You see, झुंड को अगर अपने पास अट्रैक्ट करना है तो जब तुम बात करते हो तो उस चीज में दम होना चाहिए एंड दैट थिंग इज possible only when your comments or whatever your points are supported by facts and figures. So you should have some kind of depth of knowledge when you're talking in a group discussion. I think this answers your question. Anything else? Any other question? Go ahead. This is a free session, free seminar for everyone. Jahana Shirin, Jai Hind sir, I'm a NCC cadet, senior under officer. Jahana Shirin, can I apply for both NCC special entry and CDS non-tech entry? Yes. NCC special entry is just based on the C certificate that you hold, and CDS non-tech entry is after having qualified the CDS written examination. So you write an exam and then you apply. How does it matter? If you qualify the written exam, you'll get a call for your CDS CSSB. And of course, on the basis of your C certificate, anyway, you will get a call. So the answer is yes, both. Okay. We have just 5 viewers. I think we've just 5 viewers.
today. Who is the fifth person? Sir, I have my SSB on 1st of 5th, 12 SSB Bangalore. Can you please guide me regarding screening key points to remember? Okay, when you speak, speak with confidence. Um, you would be writing a story. Let's say, chalo, this is for everyone. Nice question, Shubham. This will help everyone. Let's say you've written a story based on the picture that was shown to you, but that story, the content of the story should match the stimulus. The stimulus is nothing but the picture that is shown to you. If the stimulus has something related to, let's say, some background of a mountain and somebody climbing or things like that, and if you write a story which is regarding a fire, or maybe you say you are sitting in an office or something like that, okay, so what you've written in the story doesn't match the stimulus, so you cannot go with a preconceived idea. Don't do that कि मैं घर से एक story ready करके जाऊंगा और वही वहां पे जाके लिख दूंगा. You don't do these things. It is on the spot. Now you've written the story, you've explained what is happening, what led to this situation, what is happening now, what is the most likely outcome. So in this particular concept, in this particular setup, you should be able to remember the key points in your story, what you have written, because you will not be able to read it. They'll give you a time to read for 30 seconds or about a minute. You can read the story sheets before after they make the group for discussion, and after that you have to narrate the story. So when you're narrating the story, you have to speak with confidence because you have to address the rest of the group. But after you have narrated, pay attention to what others are also saying. Pick up the key points from the other stories when they talk about the action of the stories. And once you sew of all the actions of the stories, you are able to make a common story. जैसे जैसे डिस्कशन आगे प्रोग्रेस होता जाता है, वैसे वैसे कॉमन स्टोरी को भी आगे प्रोग्रेस करते जाओ, बोलते जाओ अपने पॉइंट्स उसके अंदर, और बाकी का पॉइंट, किसी का नया पॉइंट है तो उसको ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, एंड दैट्स हाउ यू मेक द कॉमन स्टोरी. Such a simple thing. Hi Ankit, good morning. I think I know you from my LinkedIn. Ankit Singh. Yeah, any other questions? This is a live session, doubt clearing session. Go ahead and ask all your queries. Get your all the myths cleared. We'll run this live session for about 30 minutes. Let's see how many people join. Yes, sir, I messaged you on LinkedIn. Okay, I don't think any questions are coming out of you guys. So let's say I'll talk something very generic about SSB. SSB is a test of your personality. It's not a test of your intelligence, but it's a test of your practical intelligence, which is an attribute of your personality. Practical intelligence is one of those like qualities, subhead under something which we call it as effective intelligence. Intelligence utilized in coping up with practical situations of varying complexity. What are we doing at SSB? We're trying to create miniaturized situations that you would be facing in your real life when you become an officer. All that we're trying to find is whether you have that minimum acceptable level of the candidate. Are you at that minimum acceptable level? Everything you have metrics. We've done the testing, we've got your behavior manifestations noted down with us. The interviewing officer is noting down your behavior manifestations when he's talking to you one to one. Similarly, a psychologist takes out your behavior manifestations, which are nothing but cues, attributes of your personality. They are the cues. So they write it down. GTO is observing the entire group, and that's how he writes for entire group behavior manifestations. And then we finally come together in the conference and discuss with each other whether you are meeting the minimum bar. If everyone meets the minimum bar, everyone will be recommended. There is no capping that only these many have to be selected. It's nothing like this. Let's break this biggest myth. It's nothing. It has nothing to do with that.
So now the equation is very simple. Minimum acceptable level of the candidate plus trainability is equal to average potential officer. तो इन दोनों चीज़ों का अंदाज़ा हम लोग एसएसबी में लगाते हैं. आर यू मीटिंग दैट मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एज, योर मोटिवेशन लेवल्स, द इनसाइट, द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रेनिंग, फॉर विच एंट्री यू आर गोइंग, हम लोग ट्रेनेबिलिटी का अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, इस बंदे को या इस लड़की को ट्रेन किया जा सकता है क्या मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, सो दैट ही बिकम्स अ एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर, ही रीचेस दैट लेवल ऑफ एन एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर आफ्टर पासिंग आउट पीरियड. इस चीज़ का हम अंदाज़ा लगाते हैं एसएसबी में. तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए तुम्हारा मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल मुझे फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे करेंगे? वी आर सब्जेक्टिंग यू टू डिफरेंट ग्रुप सिचुएशनल टास्क बाय द जीटीओ. तुम्हें कुछ टेस्ट करवा रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग स्टोरीज लिख रहे हो, देख रहे हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, क्या बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस आपके बाहर निकल के आ रहे हैं. ओके, सो या Okay, Aditya, the answer to your question is very simple. What you see with your eyes, जो सामने दिख रहा है ना, that is a stimulus. घर पे हो, बाहर जा रहे हो, दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हो, गार्डन में हो, पार्क में हो, घूम रहे हो, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो, you're traveling in a bus, you're going on your bike, you're going in a car with your parents, you're attending some function. Whatever you see, that is a situation. Create a story. What led to the situation? What is happening, and what is the most likely outcome? When you define the outcome, it has to be practical and rationally achievable outcome. If it's a practical and rationally achievable outcome, depending upon your pros and your cons, what are your strengths and what are your weaknesses, that will talk about you. कुछ चीज़ इमेजिन करके नहीं लिखना है, अपने पर्सनालिटी ट्रेड्स को उस स्टोरी के अंदर डालना ज़रूरी है. और ये एडजेक्टिव्स से नहीं आते. ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वॉज अ वेरी intelligent and studious student, he did this, he did that, and then he joined the army and then he became an army officer. No, you need to write about what you do which will show that you are hardworking. Don't write you are hardworking. What have you done that showcases that you are hardworking? Stories need to be like this. When they are like this, they are original. That means they are not biased by any external influence. They have come out of you naturally. We want this to happen. When this happens, you're talking about yourself. So, coming back to the SSB thing, so we have to do a very simple thing. Minimum acceptable level of the candidate plus the trainability is equal to average potential officer. Like I said, how do you adjudge minimum acceptable level? You do it by subjecting an individual, an SSB aspirant, the candidate who comes to the SSB, to various different situations, and you try to record your behavior manifestations. सब असेसर्स ने अपने अपने बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस निकाल ली. उसके बाद में क्या करेंगे? इन बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस को हम कन्वर्ट करते हैं शेड्स ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में. OLQs जो तुमने पढ़ाई होगा, OLQs है क्या मेरे अंदर? इंसान धरती पे जितने भी इंसान हैं सबके, all human beings have officer like qualities. Officer like qualities is nothing but it's just a way of describing your personality. Okay, so when you guys talk with each other ना, तेरे में OLQs है क्या, मेरे में OLQs है क्या, it sounds very funny. Everyone has got officer like qualities. All that we are trying to find out is that minimum acceptable level shade. जैसे पेंट होता है, घर पे पेंट करते हो, किया होगा घर में पेंट, कहते मुझे नीला कलर लगाना है, बट नीले कलर का कौन सा शेड लगाना है. Like this, just with this analogy drawn, the oxalite qualities also have shades. Whichever that shade is, that particular shade, which is the minimum acceptable level, if you're meeting that bar, then we add trainability to it. Trainability is also dependent on your current level. What have you performed उतने 5 दिनों में, कितना insight है, how much do you know about yourself, what are your motivation levels, what is your age, and what is the duration of training. इन चीज़ों से एक असेसर अंदाज़ा लगाता है और फिर देखता है कि अगर तुम एवरेज पोटेंशियल ऑफिसर लेवल तक पहुंच जाओगे ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में, तो ठीक है भाई, इसको रिकमेंड कर देते हैं. दिस इज हाउ SSB वर्क्स. तो स्टोरीज लिखने से कोई ऑफिसर नहीं बन जाता,
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैंटिलीवर बनाने से कोई ऑफिसर नहीं बन जाता। बहुत हाई फाई इंग्लिश में बात करोगे तो भी कोई ऑफिसर नहीं बन जाता। ऑफिसर इंसान तभी बन सकता है when you know what are your strengths and what are your weaknesses, and you are ready to work upon your weaknesses on your own without anyone else coming and motivating you. खुद से अपने आप पे काम कर सकते हो तो देन ओनली यू कैन बिकम एन ऑफिसर। एकेडमी में कोई नहीं आएगा। एकेडमी में खुद का खुद को सब कुछ करना है। यू हैव टू पुल योर सेल्फ अप। So this is how in general SSB works. Manasa vacha karmana. What you speak is what you do because that is what you have thought. जो मैंने सोचा वही मैंने बोला वही मैंने किया। जब तुम्हारी बॉडी इस चीज से सिनर्जाइज कर जाती है, वी से दैट यू हैव अटेन्ड a state of perfect equilibrium. That is the time any external influence does not affect you. Any external stress generating thing cannot poke you, and your body inherently does not develop any stress or anxiety, negative performance anxiety. अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब अगले टेस्ट में क्या होगा, अगले टेस्ट में क्या होगा, ये सब तुम ऑटोमेटिकली करना बंद कर दोगे। So all that we want to see is under extreme stress, how do you perform? Are you breaking? Every human being has got a breaking potential, every breaking quotient or a threshold, I would say. ये जो तुम्हारा ब्रेकिंग थ्रेशोल्ड है, अगर ये तुम्हारे मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल के पास है या उससे आगे है तो ऑफकोर्स यू विल गेट रिकमेंड, उससे कम है तो यू विल नॉट गेट रिकमेंडेड। तो ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर सब्जेक्टिंग यू टू दी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, एंड दैट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर रिकॉर्डिंग योर बिहेवियर मैनिफेस्टेशंस एंड कन्वर्टिंग दैट टू द शेड्स ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। क्या करना है जीडी में? बातचीत करनी है। जैसे तुम लोग बैठ के किसी हॉस्टल में कॉमन रूम में बैठ के बात करते हो, या फिर चाय पीने बैठे हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ में मूवी देखने जा रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव गॉन टू सी अ मूवी। अभी आजकल कौन सा मूवी? एवतार द वे ऑफ वाटर। So you'll keep talking about the old Avatar movie, and you'll also keep talking about the new Avatar movie, and you'll keep giving some logic, some thoughts to it. All that you're trying to do is you're just having fun talking about it. That's exactly what you need to do in GD. You don't need to fake, but you will talk substance only when there is certain kind of depth of knowledge when you're talking. If you're just talking on the surface, if you're just scratching the surface, it doesn't make sense. बात करने में दम होना चाहिए। ऑफिसर्स कैसे बात करते हैं, राइट? देन सेकेंड थिंग, जीपी कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसके लिए कोई यू डोंट हैव टू बिकम सम आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। It's a very normal thing. You've come across some problems and you're students. You need to take help of certain kind of an authority and close the loop, right? Certain kind of an authority, you need to involve them who are going to address those problems. And then you need to close the loop. ये problem solve finally कैसे होगी? आधा अधूरा तो छोड़ के नहीं जाओगे। आधे अधूरी ऑपरेशंस, आधा अधूरा प्रॉब्लम, सपोज कोई सीआई ऑप्स में हो, काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स में हो, आधा अधूरा तो छोड़ के नहीं चले जाओगे ना बीच में से, जब तक तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता। उसी का मिनिएचराइज थिंग है। क्या प्रॉब्लम्स आते जीपी में? एक गुंडा आया, किसी को किडनैप कर लिया, रैंसम मांग रहा है, यहाँ आग लगा देगा, यहाँ बम फट रहा है, यहाँ पे ट्रेन निकल रही है, वो ब्रिज उड़ने वाला है, यहाँ हथियार छुपा के रखे, यहाँ से स्मगलिंग होने वाली है, पेड़ गिर गया है, रास्ता ब्लॉक हो गया है। रोजमर्रा की सिचुएशंस है। सोच के देखो, इसमें से ऐसा सच में कुछ हो जाता है तुम्हारे साथ रियल लाइफ में, व्हेन यू आर गोइंग टू योर स्कूल्स और कॉलेजेस और वेरेवर यू गाइस आर वर्किंग, व्हाट विल यू एक्चुअली डू? And take the smartphone out of it. The smartphone has spoiled this generation, Gen Z. Sorry for this comment, but I mean to say, what I wanted to say was, we guys have gone away from reading the print media. You guys need to start reading न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल कॉलम्स, प्रिंट मीडिया पढ़ो, डेप्थ में जाओ। ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है? हमारे कंट्री ने G20 की लीडरशिप ली। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। वी आर नाउ G20 प्रेसिडेंट। Why was India selected? What did India do in the background? What were the achievements on the international diaspora? What is our standing?
डेप्थ में जाना ज़रूरी है। ऊपर ऊपर से स्क्रैच करके इफ़ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देन तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। आई डोंट थिंक सो। Sir, how to improve our English communication skills for SSB? I don't know how to answer this question, Aditya. Did you study in a Was your first language of instruction English when you studied, when you were schooled? If the answer is yes, then I do not know what additional thing that you would do. But if you really have a problem in your English grammar, rather you're not able to speak with correct grammar or pronunciation, I would suggest or highly recommend that you go and buy a book which is called as Rain and Martin, English Grammar and Composition. अब तो उसका की भी आता है। की इज जो अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स है उसका आंसर सेट भी है। उसको लाओ, लाके पढ़ो, पता चलेगा व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। We don't want you to possess vocabulary like Mr. Shashi Tharoor. We just want you to talk in grammatically correct English with right pronunciation. इतना सा ही चाहिए, कोई बहुत ग्रेट चीज़ नहीं चाहिए। वोकैबुलरी स्ट्रेंथ तो तुम्हारा तब बढ़ेगा व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स एंड यू वर्क हार्ड और पुट एन एफर्ट व्हेन यू कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स तो डिक्शनरी खोल के मीनिंग देखा एंड देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर मेमोरी दैट यू आर एबल टू रिटेन दैट थिंग इन योर मेमोरी। Okay, I've heard that NCC entry is tough compared to CDS non-tech entry. Can you suggest anything to get recommended through NCC entry? Dude, there is nothing. There's nothing. There's no suggestion. Just be yourself. That's it. यही तो बता रहा था मैं। So let's continue with GPE. GPE तो हो गया। I've already told what is GPE. Now PGT. पेपर पे पहले सॉल्व किया कुछ प्रॉब्लम्स राइट इन जीपीई। अब एक्चुअली भी सॉल्व करके दिखाओ। प्रैक्टिकली कैसे करोगे? तो हमारे पास में एक्चुअली हम इतने से स्पेस में जितना बड़ा एक एसएसबी सेंटर होता है वहाँ पे हम एक्चुअली कोई प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करेंगे कि हाँ तुम्हारे लिए पत्थर गिरा दे कहीं पे या कहीं पे पेड़ गिरा दे, कहीं कुछ किडनैपिंग करवा दे किसी की, वो तो हम कर नहीं सकते। एक्चुअल प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करोगे? That's why we say we draw two white lines on the ground and declare the ground in between those two white lines as out of bounds, that you cannot step on the ground only. अब कैसे करोगे? अच्छा ठीक है भाई, चलो कुछ स्ट्रक्चर्स रख देते हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस डाल देते हैं, स्ट्रक्चर्स के बीच में कुछ हेल्पिंग मटेरियल दे देते हैं गैप को ब्रिज करने के लिए और उसमें कुछ रूल्स बना देते हैं। लाल कलर को टच नहीं करना है, रेड मीन्स डेंजर, ब्लू पे तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हारा हेल्पिंग मटेरियल और लोड नहीं जा सकता, एंड व्हाइट कलर जहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग इज अलाउड बिकॉज व्हाइट मीन्स पीस, राइट? Now go from one place to another. That can be anything. Start line से finish line जाओ. Like for example in PGT. और जैसे जैसे आगे आगे जाओगे वैसे वैसे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। डिफिकल्टी बढ़ने का मतलब क्या है? What is rocket science in this? कैंटिलीवर बनाने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ नहीं होता। What is a cantilever? दरवाज़ा खुलता बंद होता है, दैट्स अ लीवर। एक तरफ मोशन हो रहा है, एक तरफ मोशन नहीं हो रहा। मैंने कहीं से एक जगह से रोक दिया तो उसका ऑपोजिट न्यूटन्स थर्ड लॉ, वहाँ का मोशन भी बंद हो जाएगा। दैट इज कैंटिलीवर। फट्टा कहीं पे रखना है, पीछे से बांधना है, आगे जाना है। रखने की जगह ढूंढो, फंसाने अटकाने की या बांधने की जगह ढूंढो। अगर रखने की जगह नहीं है तो रखने की जगह बनाओ, और बांधने के लिए कुछ है नहीं, फंसाने के लिए कुछ है नहीं, तो उसके लिए कुछ आइडिया ढूंढो। यही होता है कैंटिलीवर। बट कैंटिलीवर बना दोगे तो अफसर बन जाओगे। यू रियली थिंक समबडी विल मेक अ डिसीजन कि tomorrow this guy is going to become a company commander, company strength 100 people, इन लोगों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे के ऊपर तब देना है जस्ट बिकॉज उसको कैंटिलीवर बनाना आता है? नो, it is group effectiveness and team dynamics, sum total of what you have done in all the 9 tasks of the group situational tasks. By the way, it is not group testing. Group testing officer है, but he is conducting group situational tasks. These are not tests, these are tasks with a fair mixture of both physical and mental work, and indoor as well as outdoor. तो क्या किया हमने? बस गेम्स खिला दिया तुमको।
उसके बाद में क्या किया, अच्छा देखते चलो भाई, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ में compete करवाते हैं, दैट इज़ योर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। उसमें भी कुछ रूल लगा देते हैं और उसमें डिफ़िकल्टी बढ़ा देते हैं, उसमें भी कुछ लोड वोड दे देते हैं। तो एनाकोंडा स्नेक के जैसा दिखने वाला एक तुमको लोड दे दिया, स्नेक रेस इसलिए बोलते हैं उसको। देखते हैं कितना जोश टाइप ग्रुप है, व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप। पहले तो आपस में ग्रुप के साथ में compete किया, आपस में ग्रुप मेंबर्स के साथ में। अब एक ग्रुप को जब दूसरे ग्रुप के साथ में compete करने के बोलेंगे, तो सोच के देखो, what is your adherence to the group, what is your position in the group, what is your contribution to the group, so that your group will win. It is a part of your discipline. Do you really think that कि हाँ फिजिकल फिटनेस है, मैं सिंगल वॉल भी चढ़ गया, मैं डबल वॉल भी चढ़ गया, मुझे फियर ऑफ हाइट नहीं है, मैं तो कहीं से भी इधर से उधर जा सकता हूँ। तुम अकेले नहीं हो, पूरा ग्रुप है, पूरे ग्रुप को लेके चलना है, तभी तो तुम्हारा पूरा ग्रुप एक साथ एक ऑब्स्टिकल से दूसरे ऑब्स्टिकल अपना स्नेक लेकर के फिनिश लाइन पे पहले पहुंचेगा, तब जीतोगे। सो दिस इज द डिफरेंस, यू गाइस डोंट नो ऑल दीज थिंग्स। फिर जीटीओ ने क्या किया, जीटीओ ने बोला यार ठीक है यार, बहुत बड़ा ग्रुप है, एक काम करते थोड़ा मैग्नीफाई करते, कॉन्वेक्स लेंस लगाते। You know the difference between convex lens and concave lens? Convex lens is something that magnifies. You must have seen एक छोटा सा ऐसा convex lens being put by somebody who works on watches, wrist watches, and then he sees छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती है. Okay, he is able to go. GTO भी convex lens लगाता है. ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के बाद में ग्रुप को तोड़ देता है, मैग्नीफाई कर देता है. इंस्टेड ऑफ डूइंग 4 ऑब्स्टिकल्स बोलता है एक ही ऑब्स्टिकल करो, स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन जाके दिखाओ मेरे को, बट ग्रुप छोटा कर दिया मैंने ताकि मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ और फोकस कर पाऊँ एज अ जीटीओ। क्या करते हो तुम? बड़े ग्रुप में कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर पाए, अच्छा ठीक है देखते हैं, लेसर परफॉर्मेंस को चांस देना है तो छोटा ग्रुप बना देते हैं। उसके बाद में व्हाट डिड यू डू, यू कम टू लेक्चर इट। जब एक ग्रुप था वहां पे जीडी में कितनी बात करी कितनी बात नहीं करी, एक काम करते हैं, वी गिव यू डेडिकेटेड अथॉरिटी टू स्पीक। अब खाली तुम बोलोगे और बाकी सब सुनेंगे, देखते हैं व्हाट इज योर नॉलेज, English skills, communication skills, soft skills. How do you keep engaging the people with you when you have a dedicated authority? But you can engage the people only and only when you talk that has substance, and that substance means you should have depth of knowledge. So start reading. फिर उसके बाद क्या किया, हमने बोला अच्छा ठीक है भाई चलो, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में इसके लीडरशिप स्किल्स तो देख लिए, बट फिटनेस लेवल्स क्या एक बार वो भी देख लेते। जीओआर में तो पता चल ही गया था कि क्या फिटनेस लेवल्स है, बट अब डेडिकेटेड एक बंदे को देखते हैं। तो 10 ऑब्स्टिकल्स दिए अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के और करवा दिए ऑब्स्टिकल्स, पता चल जाता है उसमें कि कितना बच्चा पानी में है। बट मैंने रिपीट किया, 3 मिनट खत्म होने से पहले मैंने 10 के और 5 रिपीट करके 15 ऑब्स्टिकल्स भी कर दिए। कैन दैट मेक यू एन ऑफिसर? मार तोड़ के तो व्हेन यू गो टू एकेडमी, वहाँ पे तो इतना रगड़ा पट्टी होगा तो 3 मिनट्स में यू विल डू द सेम ऑब्स्टिकल कोर्स एटलीस्ट ट्वाइस। But that does not make you an officer. How you go about executing that obstacles with your current physical, mental, psychological, emotional state on that particular day, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड अपने कॉन्स, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को कैसे मॉड्यूलेट करके मैक्सिमाइज किया तुमने, वहाँ दिमाग लगता है, खाली फिजिकल जोर नहीं लगता। तो वो दिमाग कैसे लगाया, ऐसे 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 करूँगा कुछ, या जू 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 ऐसे हैपहैज़ार्ड जिगजैग कुछ करूँगा। जिगजैग तो गधे करेंगे, दिमाग वाला होगा तो कुछ दिमाग लगा के एग्जीक्यूट करेगा। मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, पहले मुझे क्या करना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, कैसे मैंने प्लान किया इसको। जीटीओ देता है समय 30 सेकेंड्स का देखने का, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। लेस देन 30 सेकेंड्स एंड यू नो एनिमी कैन शूट अ बुलेट एंड यू आर डेड इन सीआई ऑप्स। जीटीओ भी उतना ही टाइम देता है। मिनिएचराइज सिचुएशंस क्रिएट की जा रही है एसएसबी में, जो तुम अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे एज एन ऑफिसर लीडिंग मेन इन सीआई ऑप्स एंड वॉर, मे बी, आई डोंट नो, not the war. We pray that there should not be any full-fledged war, but yes, the operations. फिर उसके बाद क्या होगा, कमांड टास्क। अब बोला चलो भाई तुम वॉट एवर डिसीजंस योर ग्रुप मेड while you were doing PGT and HGT, everybody had the same and the equal say, let's do one thing, make you a dedicated commander for one task
and you do the task on your own. No one will interfere with what you have to do. So that is the command task. That's where he's seeing how will you give clear cut instructions to the people. But you don't have to fake, oh, do this, do that. No, normal baat karna hai. Guys, fake. And you will be able to give clear cut instructions only when you know ki what needs to be done. How will you cross the obstacle? That is your own brain. उसके बाद में what did G2 do? G2 said, okay, fine, let's bring the entire group back together again and subject them to a final obstacle, which is called as FGT, final group task. तो पहले पूरे ग्रुप को एक साथ देखा, फिर तोड़ा, फिर और जूम इन किया, फिर उसके बाद फिर से वापस आ गया. This is Gestalt psychology. Anyway, so that was about group testing. But if anyone else has any other questions about SSB in general, please ask me whatever you want to know. I can still clear your doubts before I end this live session. And I'll come live again tomorrow to clear all your doubts. In case if new people want to join, you guys can always go ahead and speak in your friend circle, in your networks, in your WhatsApp groups, in your Telegram groups, in your hike groups, that most probably I will come live tomorrow around 12 p.m. in the afternoon, for another half an hour, 11 or 12 p.m. that I will put on my social media handles what time I'm coming live, exact time. And you guys can bring more people to join my live session. And in case if you guys have any specific queries or you want to bust any myths, please come up with that. Okay, thank you guys for joining this live session. And let me end the stream now. I'll see you tomorrow again. Bye bye. Take care and all the very best for any upcoming SSBs if anyone has. Bye bye.